वो जगह तेरे लिए योग्य नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Whatever word the Lord begs me to utter, that is true. जो शब्द परमेश्वर बोलने के लिए कहता है वो सत्य है, And that's the word of God. और वो परमेश्वर का वचन है, That's the counsel of God. और वो परमेश्वर का सलाह भी है, It is for you. और वो आपके लिए है, And you have to obey that. और आपको उसको मानना जरूरी We है। have been studying about Abraham. हम अब्राहम के बारे में पढ़ रहे थे। And Abraham only one son. इब्राहिम का एक ही बेटा। And God said, परमेश्वर ने कहा, Abraham, हे इब्राहिम, and that fellow also should be sent over here. Stand up. You will disturb your father, or your father will disturb you. There are certain places all people cannot sit. कुछ ऐसे स्थान और जगह है जो सभी लोग बैठ नहीं सकते हैं। You have to sever that love, and you have to sever that love and separate yourself. और उस प्रेम को निकाल कर उसको अलग करके बैठाना अच्छा When रहेगा। you are disturbed, I am also disturbed. जब आप परेशान हो जाते तो मैं भी परेशान होता हूँ, And the connection I lose. और मेरा कनेक्शन कट जाता है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And the last separation was, और अंतिम अलगदा ये था, Abraham, इब्राहिम, take up your son, तुम्हारे बेटे को लेकर, your only son, तुम्हारा इकलौता बेटा, whom you love. जिसको तुम प्रेम करते हो। There are so many people you have to sacrifice this. कई लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। I have sacrificed that. मैंने बलिदान किया है। Some of you have to still sacrifice. आप में से कुछ लोग अभी भी बलिदान करना It बाकी is a है। command to Abraham. इब्राहिम से एक आज्ञा दिया We गया। are going to continue this subject. हम इसको और भी पढ़ेंगे। Abraham, हे इब्राहिम, take up your son, तुम्हारा बेटा को लेकर जाओ, your only son, तुम्हारा इकलौता बेटा, your son whom you love. जिस बेटे से तुम जो प्रेम What is करते that, Abraham? That what is that word? हो। वो वचन कहाँ लिखा है? Oh, you all know that. It's okay. There is someone whom we love. हम ऐसे कुछ लोगों से प्रेम करते हैं। नहीं. हम कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हम प्रेम करते हैं। Yeah, then so once again you say that. कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं। Yeah, right. That fellow. और उस व्यक्ति को, My master's eye is on that only. मेरा स्वामी की आंखों ऐसे लोगों पर रहता है। Oh, beautiful. Hallelujah. हालेलुया। So I am trying to follow him और इसलिए मैं उसका पीछा करता हूँ, because I have sacrificed that. क्योंकि मैंने बलिदान कर दिया है। Above him, there is no one in the world whom I am attached. उससे बढ़कर दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। As that uncle said, जैसे अंकल ने कहा, ഞാൻ ആരെയും പറ്റിയിരിക്കുന്നില്ല. मैं किसी से कस कर नहीं रखता हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. I am free. मैं बहुत ही मुक्त My हूँ, mind is free. मेरा मन मुक्त है, वो लड़के लोग इधर सुनते नहीं है. My mind is free. मेरा मन भी मुक्त है, My heart is free. मेरा हृदय भी मुक्त है, My body is also free. और मेरा देह नहीं तो शरीर भी मुक्त है। Hallelujah. Praise the Lord. Probably you have not reached that. मुझे ऐसा लगता है कि आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हो। Probably you don't want to reach that. आप वहां पर पहुंचने के लिए शायद चाहते I नहीं हो। wanted to reach that. मैं वहां पर पहुंचना I चाहा have reached that. और मैं वहां पहुंच भी गया। Hallelujah. हालेलुया। You got the point? आपको समझ में आ रहा How है? many years it will take for you to reach that, Mr. Hanok? आपको वहां पहुंचने के लिए कितना साल और लगेगा? Hallelujah. Praise the Lord. I never desired anybody in my life. मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति को मैंने नहीं चाहा। Once again. मेरे जीवन में मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहा। Once again. मेरे जीवन में मैंने किसी व्यक्ति को नहीं चाहा, Even now I don't want. और अभी भी मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। I am free, 100% free. मैं 100% उससे मुक्त हूँ। I am holding on to my Lord Master. मेरा प्रभु यीशु से मैं लगा हुआ हूँ, उसमें मैं कस कर What रहा हूँ। God says, परमेश्वर कहता है, take that man or the boy or the child or husband or wife, that person whom you love. और उस व्यक्ति, उस लड़का, उस पुरुष, आपका पति, उसको लेकर जाओ। Hallelujah. Praise the Lord. God wants that. परमेश्वर वही चाहता है। God wants that. परमेश्वर ही बात को चाहता है। God wants. God wants. God wants. परमेश्वर चाहता है। God wants. परमेश्वर चाहिए। You love somebody. आप किसी से प्रेम करते हो, You love either your father or mother or grandmother or grandfather or son or daughter, anybody. आप आपका पापा, मामी और आपका दादा, दादी, किसी से तो प्रेम करते हैं। Are they shocked? Praise the Lord. My Lord wants only that person. मेरा परमेश्वर केवल उसी व्यक्ति को चाहता है।
Take that. Last separation. और अंतिम जो अलगदा ये था, That's the last separation. अंतिम अलगदा ये था, That's the last separation. अंतिम अलग रहना ये था। Take that fellow उस व्यक्ति को लेकर जाओ and sacrifice him at the Mount which I will show you. मोरिया that. के पर्वत पर जाकर उसको बलि चढ़ाओ। See, God's eye is on that person only. देखिए परमेश्वर की आंखें उसी व्यक्ति के ऊपर है। God's my mind is on that thing only. परमेश्वर का मन उसी व्यक्ति पर लगा I है। have left everything. I have left everything. मैंने सब कुछ छोड़कर आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। You may dance, आप ऐसे नाचेंगे, but nothing will please him. लेकिन उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। Are you able to understand that? आपको समझ में आ रहा है? Nothing will please him. उसके द्वारा वो प्रसन्न नहीं If होगा। my Lord's eye is on that यदि person, मेरा स्वामी का आंख उस व्यक्ति my के ऊपर है, master wants that person only. मेरा स्वामी को वही Glory. व्यक्ति चाहिए। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Not anything you like. जो कुछ आप चाहते वो नहीं। If my master's eye is on there, यदि मेरा स्वामी के उस आंखें उस व्यक्ति के ऊपर है he तो will demand it. वो मांगेगा। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Give to God. परमेश्वर को दे दीजिए। That I don't want to touch now. अभी मैं उसको छूना नहीं चाहता हूँ, But I want to say something more than that. उससे भी बढ़कर कुछ बोलने के लिए We चाहता are pilgrims in this world. हूँ। हम इस दुनिया में मुसाफिर नहीं तो यात्री We है। are pilgrims in this world. हम इस जगत में यात्री है। The world is so bad. संसार इतना बुरा है The world is full of evil things. और संसार पूरा बुराई से भरा हुआ है। And one thing I want to tell you about this Abraham और today. इस इब्राहिम के बारे में एक विषय मैं आपको बोलना चाहता हूँ, And I think K. Yeshudas will love it. और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर के यशुदास इस बातों को से खुश होगा। And I think that Brother P.M. Varghese will delight on that. और मुझे लगता है कि पीएम वर्गीस अंकल इसके द्वारा खुश भी होंगे। And I think Mr. G. Varghese will be get ready to practice that. और ब्रदर गी वर्गीस अंकल उसको करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। And only a few names I took. केवल थोड़े नाम मैंने लिया But अभी, everybody has to apply that. लेकिन सभी लोग ऐसा करना पड़ेगा। Come with me to the book of Genesis. मेरे साथ उत्पत्ति का पुस्तक में आ जाइए। 18th chapter. 18वां अध्याय। I have got problem with my specs and eyes. You will all join to me. 16th verse. 18 का 16 वचन, 18th chapter 18 अध्याय and the 16th verse. और उसका 16वां वचन। ആ പുരുഷന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സ്വതം വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞ് അബ്രഹാം Lift your heads. അവരോട് കൂടെ പോയി. Read louder. ആ പുരുഷന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സ്വതം വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞ് അബ്രഹാം അവരെ യാത്രയപ്പാൻ In those days, Abraham was not having any concrete homes. In those days, Abraham was not having any concrete और उन दिनों में इब्राहिम के पास कोई भी पक्का जो भवन नहीं था, कंक्रीट वाला भवन नहीं Though he था। was a very rich man, वो बहुत ही धनी व्यक्ति था तो भी was a poor man, क्या वो गरीब व्यक्ति था? God made him rich. परमेश्वर उसको धनी बनाया। If you obey Jesus, यदि आप यीशु की बातों को मानोगे, God will make you rich. परमेश्वर आपको धनी बनाएगा। God made him rich परमेश्वर ने उसको धनी बनाया because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके संग He था। was always living in tents. हमेशा तंबुओं में रहता था। He was always living in tents. वो हमेशा तंबुओं में रहता था। And as he was just taking rest in his tent, एक बार वो अपने तंबू में विश्राम करने के समय he में looked yonder उसने दूर देखा and he saw three persons who were walking through. और उसने देखा कि 3 लोग चल रहे हैं। The word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, he ran to them. You look here. He वो ran to them. वो उनकी ओर दौड़ कर चला And he said, और उससे कहा, Masters, हे स्वामियों, please come. मेहरबानी करके आइए, Please take rest आप आकर विश्राम करो under this tree. और इस पेड़ के नीचे I विश्राम will करो। get you some water to drink. मैं आपके लिए थोड़ा पानी लेके आता हूँ पीने के They लिए। acceded to his request. The word of God says. और इब्राहिम की बातों को उन्होंने मान लिया, He made them to take rest over there. वहां पर विश्राम करने के लिए The दिया। word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, he ran. Not he walked like this church, even the people who are living in church, pastor बुलाता है, आता है. चर्च में रहने वाले पास्टर बुलाता है, आता है, बोलो ना. चर्च में रहने वाले लोगों का पास्टर बुलाता है, आता है. He ran to his wife and he took one bori, about 30 kilos of flour. और 30 किलो आटा उसने लिया And he gave it to his wife. अपनी पत्नी को देकर, Please make unleavened bread out of this.
और खमीर ना डाला हुआ जल्दी से रोटी बनाना, akmiri. Ak- What's it called? Yeah, unleavened bread. अखमीरी रोटी बनाना, And he ran to the herd और जल्दी से अपने भेड़ों के पास गया and he took a small heifer. और छोटा सा वहां से उसने भेड़ लिया। You know, Jews were eating bullocks, ox, cows, and everything there. आप जानते हो कि बैल इत्यादि सारे वस्तुओं को यहूदी लोग खाते थे। Is it in your Bible? आपकी बाइबल में लिखा है। Open your Bible. But there is some
साथ जाते हुए चलते I हुए sit alone. मैं अकेला I बैठकर pray alone. मैं अकेला प्रार्थना करता हूँ I deal everything alone. और अकेला सारे विषयों को करता हूँ। Not that because you are not good. आप लोग अच्छे नहीं है You इसलिए are नहीं, so good. आप तो बहुत अच्छे हैं, But to my spiritual standard, लेकिन मेरे आत्मिक अवस्था के लिए only I can talk with my master. केवल मैं अपने स्वामी से बातें Now कर we सकता want to put to you this Sunday. हूँ। और इस रविवार को Starting. बहुत ही नजदीक मित्र You है got friends. और दोस्तों है You got intimate friends. और बहुत ही करीब के दोस्तों भी है, But all these things you have to leave. लेकिन ये सारे विषयों को छोड़ना पड़ेगा। But I am taking to you to a higher level. लेकिन आपको मैं और भी ऊंचाई में लेकर जाना चाहता हूँ Jesus, make Jesus as your intimate friend. और यीशु को आपका नजदीक का दोस्त और मित्र बना दीजिए। What a friend we have in to carry everything to God in prayer. பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண ஸ்நேகிதருண்டே. பாடுகளை தமிழுக்கெல்லாம் பறந்து போயிடுச்சு. இப்போ கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறாங்க எல்லாரும். Praise God. Hallelujah. God said 17th chapter. परमेश्वर 17 अध्याय में बोला, To Abraham God said. इब्राहिम से परमेश्वर ने बोला, 17th chapter, first verse. 17 अध्याय पहला वचन। Quickly, I have to cover up certain verses. 99-year-old. 99 साल का व्यक्ति, No one is 99-year-old. यहाँ पर कोई भी 99 साल का My नहीं। first sister is 99-year-old. मेरी पहली बहन जो वो 99 वर्ष की है, She has already started walking with God. वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया When है। 99-year-old, ये 99 साल का व्यक्ति, the Lord appeared to Abraham परमेश्वर ने इब्राहिम को दिखाई दिया and said, और उससे कहा, I am God Almighty. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर Open हूँ, your mouth and say, I am God Almighty. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, Walk before me. मेरे उपस्थिति में चल, Walk before me. मेरे उपस्थिति में चल, Walk before me. मेरे उपस्थिति में Say, चल। man, walk before me. Walking with my master even right now. अभी से ही मेरा स्वामी का साथ चलने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। I wish all of you, आप सभी से मैं चाहता हूँ even right now, अभी ही make Jesus as your friend. यीशु को अपना मित्र बना लीजिए Start walking with Jesus. और यीशु के साथ चलने के लिए It's a शुरू very कीजिए। wonderful study. ये बहुत ही अद्भुत एक पढ़ाई है। Sisters, बहनों, you are all married, I know that. मैं जानता हूँ कि आप But अविवाहित still हैं, you can do this thing. फिर भी आप ये काम कर सकते Still हो, you can do this thing. फिर भी आप ये काम कर सकते हो। Abraham was a married man. इब्राहिम एक शादी किया व्यक्ति था, Hallelujah. हालेलुया, And a very rich man at that. और उस समय बहुत ही धनी व्यक्ति था And he walked with those three people. और उन 3 लोगों के संग संग चला, He walked with those three people. उन तीनों लोगों के साथ चला वो। And in the Old Testament, we find the book of Genesis. और उत्पत्ति में पुराने नियम में हम देखते हैं Noah was walking with God. नूह परमेश्वर के साथ। Protection from God. क्या परमेश्वर का संरक्षण चाहिए? You want protection from the great destruction which is going to take place? बड़ा विनाश जो होने वाला, उससे आप बचने The के लिए चाहते Spirit हो? of God is talking to you. परमेश्वर की आत्मा आपसे You बोल may रहा है, have wives. आपके लिए पत्नियां होगा, You may have children. बच्चे भी आपके लिए है तो, You may have daughters-in-law. और आपके लिए बहुओं भी है, For your safety. और आपके संरक्षण के The लिए Holy Spirit says you, पवित्र आत्मा बोल रहा है, stop talking and walking with the human beings. और बातें करना, लोगों के साथ चलना, उसको बंद करके। You may be old. आप तो शायद बूढ़ी हो गई You होगी, may be gray hair. और आपका बाल सफेद The हो गया। Holy Spirit speaks to you. पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, Walk with God. परमेश्वर के संग संग You चलो। can be a source of protection for your whole family. आपके पूरा घराने के लिए आप एक उद्धार का नहीं तो The whole world will be destroyed. पूरा दुनिया नाश हो तो भी If you start walking with the Master, मेरे स्वामी के साथ चलेगा तो God assures you God can protect your family from destruction. परमेश्वर भरोसा दिलाने चाहता है, परमेश्वर आपकी पूरी परिवार को सहायता करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You want to walk with the human beings? क्या आप मनुष्य के साथ चलने के लिए चाहते हो? With the drunkards? क्या वो पिए करके लोगों के साथ चलने With the चाहते हो? blasphemers?
वो झूठ बोलने वाले लोगों के साथ with चलने, the money deceivers, जो पैसा का धोखा देने वाले के साथ with चलने the का, flesh eaters. क्या वो मांस खाने वालों के साथ, Stop walking with them. और उनके साथ चलना बंद करो। My God commands you today. मेरा परमेश्वर आज आपको You आज्ञा want देता है। protection. क्या आपको संरक्षण चाहिए? You want provision. आपके लिए कोई प्रबंध My चाहिए? master is almighty. मेरा परमेश्वर Start सर्वशक्तिमान है। walking with आप उसके him. साथ चलना शुरू कर दीजिए। आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It's a very big subject. ये एक बड़ा विषय है। It is good that you start walking with my master. आपके लिए अच्छा रहेगा यदि मेरे स्वामी के साथ साथ चलोगे। Hallelujah. हालेलुया। And the first fellow we find, पहले व्यक्ति को देखते हैं, Hanok, not this Hanok. ये हलोक नहीं, लेकिन परमेश्वर का Yesterday वचन। night also I couldn't see that fellow coming and sitting in the prayer at that night 10 o'clock. Praise God. Praise the Lord. Say that man. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And we had an Hanok. हमारे लिए हनोक है। He was a married fellow. वो शादी किया व्यक्ति था। You married fellows, to you I am talking about. आप शादी के लोगों से मैं बोलता हूँ, To you the Lord is speaking. आप विवाहित लोगों से कहता The हूँ, Spirit of God is speaking to you, married fellows. और शादी के व्यक्ति से परमेश्वर की To आत्मा you बोल रहा है। women who are married, the Lord is speaking to you. आप शादी के व्यक्ति से परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। Not only 10 years, 10 साल के बाद not नहीं, only 30 years, 30 साल नहीं, 300 solid years. 300 मजबूत साल। Hallelujah. Praise the Lord. Rita, you can't say excuses to my master. Bharati, he won't accept your excuses. Hanok was a married fellow. अनोक एक विवाहित व्यक्ति था। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. How many years he walked with my master, you know? मेरे स्वामी के साथ कितना साल वो Every चला। day he was walking with my master of God. परमेश्वर का वचन को समझ लीजिए। Sound teaching comes from here. खरा उपदेश यहाँ से आता है। Sound teaching comes from here. खरा उपदेश यहाँ से आता है। God's word, undiluted word is coming from here. परमेश्वर का वचन जिसमें कोई मिलावट नहीं यहाँ से बोला God जाता है। didn't say, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। didn't say to Hanok, परमेश्वर ने हनोक से throw नहीं बोला, your children in the water. तेरे बच्चों को पानी में फेंक दो, ऐसा नहीं Come बोला। with me, walk with me. मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो, That's ऐसा not biblical teaching. ये परमेश्वर का पवित्र That is a शास्त्र, wrong teaching. वो गलत शिक्षा है, There is a wrong teaching. वो गलत उपदेश है, There is a wrong teaching. वो गलत उपदेश है। Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. हालेलुया। This platform produces only right teaching, और ये प्लेटफॉर्म में से हमेशा खरा उपदेश निकलता not है, attractive teaching. बहुत आकर्षण देने वाला उपदेश नहीं। Hallelujah. Praise the Lord. But the true teaching, लेकिन सत्य का पढ़ाई यहाँ से होता my है। Bible मेरे says, बाइबल कहता है it is true. और वो खरा है। My Bible says, मेरे बाइबल बोलता है it is 100% और true. वो 100% सही My है। Bible says, मेरा पवित्र शास्त्र कहता है Hanok was giving children birth and he was walking with God. वो बच्चों को उत्पन्न करने के बाद परमेश्वर के साथ साथ चलता था। छोटा यीशुदास, तुम्हारे समय बाकी प्रभु ने दिया है. Praise God. Hallelujah. He walked with God. वो परमेश्वर के संग संग चला, He was so close. परमेश्वर से बहुत ही करीब था। That uncle said, वो अंकल ने कहा, what was the Malayalam word he said? मलयालम कौन सा शब्द बोला? അവൻ ദൈവത്തോട് നടന്നത് ഇത്രയും പറ്റിയിരുന്നു, वो परमेश्वर के साथ चल के इतना कस कर रहा। ദൈവത്തിന് അവനെ വിട്ടു പിരിയാൻ മനസ്സില്ല, അല്ല ഇവന് ദൈവത്തെ വിട്ടു പിരിയാൻ മനസ്സില്ല. परमेश्वर को इसको छोड़ के जाने का मन नहीं था और इसको भी परमेश्वर को छोड़ के जाने का मन नहीं था। Hallelujah. Praise the Lord. Matthew brother, Varghese brother, Varghese brother, God speaks to you right now. परमेश्वर इसी समय आप लोगों से बातें करता है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। सेक्रेटरी साहब, आपके लोगों को सिखाओ, ये वचन को सिखाओ. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise God. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല, പ്രതികൂലം അനവധി വന്നിടുന്നു, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, കഷ്ടതയനവധി വന്നിടുന്നു, എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എൻ നാഥൻ നടത്തി, ഗ്ലോറി, അന്ത്യം വരെ എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എൻ നാഥൻ നടത്തിടും.
I have loved to sing the whole song. मुझे अच्छा लगता है कि But पूरा गाना को मैं the गाऊं, time is running. लेकिन समय मुझे अनुमति नहीं देता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Enoch to walk with God. God with his father was so great and close and powerful. परमेश्वर पिता के साथ उसका लगाव इतना सामर्थ्य और महान था, Like the magnet. और जैसे चुंबक के समान, As the father went up, जैसे पिता चले गया, this man also disappeared. और ये व्यक्ति भी अदृश्य हो गया। शुरू कीजिए। Hallelujah. Praise the Lord। Abraham is giving me warning. इब्राहिम मुझे चेतावनी देता है। Hallelujah. Praise the Lord। Abraham walked with God. इब्राहिम परमेश्वर के संग संग चला। Start walking with God. परमेश्वर के साथ चलिए। Start walking with God. परमेश्वर के साथ चलने के लिए Start शुरू, walking with God. परमेश्वर का चलना शुरू कर दीजिए। Sardis sub in church, सरदीस कलीसिया, and there were some people. और वहां कुछ लोगों सरदीस What कलीसिया God में थे। says in Sardis church, और सरदीस की कलीसिया में 3rd chapter of Revelation, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय, 3rd chapter of Revelation, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, what the word of God says, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? 4th verse, 4th verse, please all of you 3-4, 3 Revelation 3-4, വെളിപ്പാട് 3-4, വെളിപ്പാട് 3-4, പ്രകാശിത വാക്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ 3-4, louder you have तुम्हारे पास है। Church of Gandhidham, हे चर्च ऑफ गांधीधाम, Church of Gandhidham, हे चर्च ऑफ गांधीधाम, God wants to say परमेश्वर कहता है you have a few people. कुछ थोड़े लोग ऐसे हैं। You have how many people? How many people? You have few people कुछ ऐसे लोग हैं who have not soiled their clothes. जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। They will walk with me. वो मेरे साथ घूमेंगे, They will walk with me. वो मेरे साथ घूमेंगे, घूमेंगे लिखा भी है? They will walk with me. वो मेरे साथ चलेंगे, They will walk with me. वो मेरे साथ घूमेंगे। తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరచుకొనని కొందరు సార్దీసులో నీ యొద్దరు ఉన్నారు. వారు అర్హులు గనుక அவர் என்னோடு கூட వారు నాతో కూడా సంచరించెదరు. నీవెవరితో కూడా సంచరిస్తున్నావు? అమ్మతో, నాన్నతో, చెల్లితో. నీవా దేవుని సేవ కొరకు నీ యోగ్యుడు కాదురా? ప్రైజ్ గాడ్. దే విల్ వాక్ విత్ మీ. वो मेरे साथ They चलेंगे, will walk with me. वे मेरे साथ चलेंगे। എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട്, അവർ എന്നോട് കൂടെ നടക്കും. தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில பேர் சர்தையிலும் உனக்குண்டு. அவர்கள் பாத்திரவான்கள் ஆனபடியால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோட கூட நடப்பார்கள். யாரு கூட நடக்கிறோங்க? என் மாப்பிள்ளை கூட நடக்கணும், என் பிள்ளைங்க கூட நடக்கணும், என் பேர பிள்ளைங்க கூட நடக்கணும். மாய 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 Rita, there are a few people in Sardis. सरदीस में ऐसे कुछ लोग हैं। Jesus says, यीशु बोलता है they will walk with me. वे मेरे साथ चलेंगे, They will walk with me. वे मेरे साथ